and you have 3.5 years in your hand. You just have to make every trend yours. Relaxing is productive as well. Invest in your preparation. 150 लाओ या 250 लाओ, फर्क नहीं पड़ेगा. Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is a Friday video where I answer all the questions that you have asked me on Instagram. तो मैंने Wednesday को वो Q&A डाला था and I got a lot of questions and I'll try to answer as many as I can. And yeah, let's just dive deep into it. दी just reminding you have a WhatsApp group too. चलो फिगर आउट करते हैं कि WhatsApp ग्रुप पे क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं. But yeah, I totally needed this reminder. I'm in my first year and will be tested on everything in May. How will I cram for it? देखो पहली बात तो remind yourself कि साल भर पढ़ाई करी है, कुछ ना कुछ तो किया है. Now what is important is कि जो चीज़ों पे आपका टेस्ट होने वाला है उन चीज़ों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड 1 month इज़ सफिशेंट टाइम. यू हैव टू टेल योर सेल्फ, you'll have to find time to invest in your preparation in a way, it's in a strategic way that you overcome stress, that is your exam, and it is doable, it is possible. Apart from that, I think if you have like a preparatory leave फिर तो हो ही जाएगा. देखो, this is such a real problem, the homesickness that you face, especially for studying or for working. What worked for me was going through my photo gallery, जो मैं बहुत बार करती थी, and I used to cry. So that is one emotional outlet. Talking to my friends and my family members really helped me. But the best thing that worked for me was cooking home cooked meals, जो मेरे को बाहर नहीं मिलते हैं. तो मेरे को एकदम घर की याद आती थी. Whenever I used to eat the दाल चावल, दाल खिचड़ी or the non-vegetarian dishes which are very common in my household. Oh my god, it used to make me feel so happy. इतनी खुशी होती थी वो सब बना के. थोड़ा टाइम ज़्यादा था, that was the con. Once in a week or once in 2 weeks, I think you can treat yourself. Surprisingly, this is very common कि आपको आपके field में interest आना बंद हो जाए after certain point, maybe even after achieving that particular degree. But it's okay. I just want to tell you that it's okay. And wise decision ये है कि आप ऐसा decision लो अपने आप के लिए जहाँ पे आप खुश हो, where you have the ability to practice that profession everyday basis पे without crying every other day, you know, like कि मैंने क्या किया, rethinking your life choices. Because the farther you go on that train, it is going to be expensive to come back. वो Japanese proverb है ना, अगर आप गलत ट्रेन पे बैठ गए हो तो जितना दूर जाओगे उतना expensive होगा return. Like it's good that you have understood this and it's never too late. Just give yourself this time, this break that you need, and it's a wise decision. December FMG में बहुत टाइम है, 6 महीने से ज़्यादा है. तो my top 3 tips for you would be, first, tell yourself कि it is possible, it is doable. It's just a competitive exam. It's not even a competitive exam, it's a screening exam. And मुझे बस 151 लाना है, that's about it. Previous year questions, previous year topics पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो. Question solving पे utmost ध्यान दो. Mock test लगाने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा. And try learning from your mistakes. That's the only way to avoid any mistakes whatsoever on the D-Day, because you cannot afford to do the same mistakes on the D-Day that you can do right now in your practice sessions. It's all the more important कि सारी गलतियाँ अभी कर लो. Okay? And practice questions का source for me it was Marrow QBank. Apart from that, I think मैंने ये भी use किए, 2 books use करी हैं, FMG Solutions and Kamal KV. So yeah. Hey, thank you so much. This means a lot to me. I am so grateful for all your love and support. मेरे नाम का मतलब मैं एक रील में बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, so keep an eye out for that. See, for me, when I started creating content, it was something which was balancing my academic side. Like I always was artistic. Growing up, I used to do sketches वगैरह, मैं ये सब चीज़ें करती थी और मेरे को वो express करने का मौका नहीं मिलता. तो to balance out that while doing medicine, I realized that I can do this, so I started doing this. So tip number 1 कि do it for yourself. ये सोच के चलो कि ये चीज़ ना मैं बस अपने लिए कर रही हूँ, या मतलब मेरे को मज़ा आ रहा है करने में, इसलिए कर रही हूँ. Don't do it for anything else. Not for the views, not for the perks. Not to say that the perks or the views are not important, they are 100% important, but beginning में just focus on polishing your skills and making yourself better, because नए में जब आप कोई भी चीज़ नए से करते हो तो you are not very good at it. So just
improve yourself, and then after that you can learn the sales and the marketing and the advertising part of it and the promotion part of it. Everything you will learn in due time. So just give yourself the space to grow as a artist, एंड धीरे धीरे करके सब चीज़ सीखते जाओ. देखो लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो, फिर खुद भी ट्राई करो और अपने हिसाब से लाइक stay yourself, stay authentic, like make it yours. Like you just have to make every trend yours. This is one of the biggest tips that I can give you. How to handle heat with studies, because I can't. Of course I understand, while studying it is utmost important कि आप अपना favorable environment maintain करो. So what I used to do was take at least 2 showers, have buttermilk. ये चीज़ मैंने अभी recently बहुत ज़्यादा inculcate किया है मेरे routine में. And I used to eat a lot of seasonal fruits like mangoes, watermelon, cucumber, etc. And yeah, hydrate yourself. It really helps. And थोड़ा you'll have to focus कि भाई this is the weather, this is the situation, it is what it is, let me just put a forest session and get through with it. I hope this helps. The one advice I want to give to every FMG aspirant or a NEET PG aspirant or INI CET aspirant is that कि mock review ना करने की गलती तो बिल्कुल मत करना. Like always make sure that you are reviewing your mocks, and रिव्यू करने के बाद आपको सीखना है उससे, अपनी गलतियों से. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ टेकिंग मॉक्स. चाहे आपके अच्छे मार्क्स आए हो, चाहे आपका मतलब ट्रेंड राइजिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने गलतियां अगर करी हैं तो उससे आपको सीखना है. नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हाट, how much you've scored. Okay, so right now I'm giving myself a break. I'm not taking any exam, I'm not doing any job at the moment. I am giving myself a break from medicine because for the past 6 years I pursued medicine in Ukraine. Post that I gave my FMG examination and cleared it with a score of 208 on 300, and then I did 1 year of internship in Pune, and I never gave myself a break throughout this journey ever since 12th standard. And I feel like I deserve a break. I need to explore my other sides and see where life takes me, where I can go, what I can do with my potential, because I feel like I'm more than a doctor. I'm not just a doctor, I'm not just a medicine professional. I think I can do more than this. And yeah, that's what I'm doing right now. I'm so glad that I inspire you. Thank you so much. Again, burnout is a real thing. You need to give yourself the break. You have passed one of your competitive exams, right? Congratulations on that. Give yourself a break. Go do the things that you really like to do apart from studying. And yeah, just take a pottery class, do some Pilates, or do whatever you feel excites you. And uske baad, then you will see yourself come back to studying with all the more vigor and excitement कि हाँ अब पढ़ते हैं. Sometimes you need to detach to attach properly. Hope that makes sense. Okay, so I was creating content since my pre-final year, and how I managed content creation and studying was, I didn't do it in a very healthy way. My way was very toxic because I thrived on toxic motivation. I come from a Brown family, and I think that's all I know. Toxic motivation, nothing to brag about, but yeah, that's what it is. So breaks me, I used to create content. I used to find like 1 hour in a day to create content. सम डेज़ 1 आवर नहीं मिल पाता, 15 मिनट में स्क्रॉल करते करते ऑडियो सेव कर लिए, फिर उसके बाद खुद ही को आइडियाज़ भेज दिए, फिर आइडियाज़ लिख लिए अगले ब्रेक में, फिर जब लाइट बराबर शाम के टाइम आती है तो वो टाइम पे शूट कर लिया, फिर अगले ब्रेक में एडिट कर लिया, फिर वो सब करके फिर पोस्ट कर दिया. ऐसे करके आई यूज्ड टू डू, क्योंकि स्टडिंग वाज लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ माई डे एंड कॉन्टेंट क्रिएशन वाज लाइक अ माइनर पार्ट ऑफ द डे. सो या, I feel like when you don't find the motivation to start, or when you're not excited to start, it's your body telling you that you have to remind yourself that relaxing is productive as well. I don't know how we have been made to believe that relaxing and taking a break is not productive, because servicing तो गाड़ी की भी करते हो यार, तुम मेंटेनेंस तो बिल्डिंग का भी भरते हो, तो तुम अपने आप के लिए क्यों नहीं मेंटेनेंस का टाइम, सर्विसिंग का टाइम और मनी और ये सब चीज़ें निकालते हो? लाइक व्हाई डोंट यू डू दैट फॉर योर सेल्फ? डू यू हेट योर सेल्फ दैट मच? इज दैट व्हाट इट इज़? I don't think so. We're just young individuals who have been taught wrong things, and it's time for us to unlearn that.
Don't push yourself into a loop of toxic motivation. Genuinely doesn't take you too far. It hampers your potential. So just give yourself the break you need. You'll bounce back like this, I assure you. All the best. Screening exam है, 150 लाओ या 250 लाओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा. 250 पॉसिबल है एंड 250 लाने से हेल्प होगा नीट पीजी में. बट अगेन नीट पीजी के लिए तो फिर से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. 2 अलग एग्जाम है. इससे तो आप JR0 बन रहे हो. तो चाहे आप 151 लाओ या 251 लाओ, इट डजेंट रियली मैटर. एंड यू हैव 3.5 years in your hand. I've seen people do it in 3 months. So don't worry, टेक अ डीप ब्रेथ. जिसने भी आपके अंदर ये एंजाइटी इंड्यूस करी है ना, उनको जाके बोलो शांत हो जाए, थोड़ा ब्रेथ वर्क करें एंड आराम से यू विल क्लियर. यू विल गेट अ गुड ग्रेड फॉर श्योर. पहली बात, दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट. तो आपने 2 अटैम्प्ट दे दिए, बहुत बढ़िया. नाउ यू हैव एक्सपीरियंस. नाउ डोंट थिंक अबाउट दैट. म्यूट all the negative noise in your background. Just focus on mock test. You know everything, you know all the syllabus. तो syllabus वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप मॉक टेस्ट पे फोकस करो, राइजिंग ट्रेंड लाने की कोशिश करो, और जो भी गलतियाँ हो रही है उन गलतियों से सीखने की कोशिश करो. इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, विद इन 2 months यू विल गेट देयर एंड यू विल पास दिस एग्जाम इन दिस वेरी अटेम्प्ट. आई एम डेड श्योर अबाउट दिस. जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन. सारे मॉक टेस्ट जो है पिछले 2 अटेम्प्ट के, वो सारे निकाल के फिर से चेक करो. देखो कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन से वाइटामिन का नाम याद नहीं रह रहा है, कहाँ पे क्या याद नहीं रह रहा है. ऐसे करके हर चीज़ याद करो. एवरी लिटिल थिंग राइट डाउन. सेकेंड बुक लिखो, उसके अंदर सारी गलतियाँ लिख दो. आई मीन सेकेंड बुक बनाओ, सेकेंड बुक के अंदर सारी गलतियाँ लिख दो. And that's the end of the video. I tried answering as many questions as I can. Thank you so much for all your questions. And अगले फ्राइडे हम फिर से Q&A करेंगे, so don't worry. अगर आपका क्वेश्चन इस बार आंसर नहीं हुआ है तो अगले फ्राइडे पक्के से हो जाएगा. And yeah, see you in the next one. अगला वीडियो मंडे को आएगा. Bye. जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना. जो नहीं पसंद आया है या पसंद आया वो सारी चीज़ें कमेंट में बता देना. एंड लव.